Good morning. My name is Mahmood, Faiz, and welcome to Revive Radio. Revive Radio is available at 94 FM at the heart of the New Wave community. Don't forget to subscribe, comment on our Facebook page, Revive FM UK. Follow us on Facebook and Instagram. If you are on social, don't keep it to yourself. Share this now with your colleagues so people across the globe can listen to Revive FM. I said, my name is Mahmood, and I'll be your host today on discussion of Kashmir and the current situation. Just to use myself first, my name is Mahmood, and I'm also the chair of Liberal Democrat Friends of Kashmir, and I've been working the issue of Kashmir since, I'm going to show my age now, but since the 80s. With me, I have the whole, our honored guest, Mr. Siddiqui, who has come in especially from Kashmir to listen, to put his views across to our viewers. Then we got Niaz Ahmed, who's a local resident. And then, of course, Mr. Sanwar Hussain, who's come from the London Borough, Newham nearby. Mr. Siddiqui, I think the best person to introduce themselves is you yourself. Could you just introduce yourself to the listeners? Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you so much. आपका बहुत शुक्रिया महमूद फैज साहब, और मैं इस रिव्यू 94 का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिसने हमें ये मौका फराहम किया कि आज यहाँ मैं बरतानिया के टूर के दौरान यहाँ बिलखुसूस कश्मीरी ओवरसीज जो हमारी कम्युनिटी है उसके सामने मैं अपनी बात रख सकूं. थैंक यू सो मच. And you yourself, Mr. Niaz Ahmed, I'm sure local residents know you, but if you could just introduce yourself. Assalamu alaikum. मैं तकरीबन 72 से लेकर माशाल्लाह कश्मीर के साथ जो है मुंसलिक हैं, और उसके लिए जो जितनी भी जद्दोजहद हो सकती है हम कोशिश कर रहे हैं. और माशाल्लाह उसके बाद मैं मनाजुल कुरान के साथ भी मुंसलिक हूँ 94 से, और इंशाअल्लाह हमारी ये कोशिश है कि हम कश्मीर के लिए कोशिश करते रहेंगे. और नियाज हम. Thank you very much. And you yourself, Mr. Sanwar Hussain. जी अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम सनवर हुसैन है और फैज साहब मैं आपका बहुत मशकूर हूँ. और मैं भी 92 से यूके में आया हूँ, और सिंस आज़ाद कश्मीर से लेकर यहाँ आने तक आज तक का सफ़र जो है वो किसी न किसी तरीके से कश्मीर के हवाले से काम करता रहा हूँ और कर रहा हूँ, इंशाल्लाह करता रहूँगा. Mashallah, thank you very much. I just want to get to about you personally. If Sajid Sahib, you could tell us personally how you got involved in the issue of Kashmir and why you did get involved in the issue of Kashmir. Thank you so much. First of all, मैं दोबारा एक दफ़ा अपना तारफ़ करवाना ज़रूरी समझता हूँ. Sorry to say, साजिद सिद्दीकी नाम है. मैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान जोन का प्रेसिडेंट हूँ, और मैंने JKRF ज्वाइन की when I was in class 7, 13 years. माशाल्लाह. In 1989. उस वक्त चूँकि तहरीक आज़ादी का इनिशियल स्टेज था, और तहरीक आज़ादी उस वक्त चूँकि बहुत अरूज पर थी, और कायदे तहरीक अमानुल्लाह खान मरहूम ने उस वक्त जो है वो इनिशियली इस तहरीक का आगाज़ किया था इनसाइड कश्मीर के अंदर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से हम कहते हैं. तब से लेकर अब तक मैं स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट, फिर JKLF, उसके मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ मेरे पास रही, और आज मैं मेरी 36 ईयर जो है वो आप कह सकते हैं कि स्ट्रगलिंग मेरा टाइम है इस तहरीक के अंदर. और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं JKLF का प्रेसिडेंट हूँ आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान जोन का. मसला कश्मीर के हवाले से आप सारे दोस्त उस हवाले से आगाह हैं कि ये यूँ तो बहुत पुराना किस्सा है, बट 1947 को जब ये बड़े सगीर तकसीम हुआ, आज जिस मुल्क में हम बैठे हैं, इस मुल्क के एम्पायर जो जब इनका कब्जा वहाँ से ख़त्म हुआ, बरतानिया का, UK का, यूनाइटेड किंगडम का, तो बड़े सगीर दो हिस्सों में तकसीम हुआ. हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो आज़ाद रियासतें मर्द वजूद में आई. उस वक़्त जम्मू कश्मीर जो था वो एक ऐसी रियासत थी जो उस वक़्त भी डायरेक्टली इनके कंट्रोल में नहीं थी, बल्कि वो इंडिपेंडेंट रियासत थी जिसके महाराजा हरी सिंह उसके आखिरी हुक्मरान थे. और महाराजा हरी सिंह ने उस वक़्त रियासत जम्मू कश्मीर का, जब ये दो रियासतें हमारे वजूद में आई तो उनको ऑप्शन दिए गए कि आप दो रियासतों में से किसी का इंतखाब करें, या आज़ाद रहना चाहें तो अपनी आज़ाद हैसियत को बरकरार रख सकते हैं. तो महाराजा हरी सिंह ने स्टिल एंड स्टैंड एग्रीमेंट किया उस वक़्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ कि मैं अपनी जो रियासत जम्मू कश्मीर है इसकी आज़ाद हैसियत को बरकरार रखना चाहता हूँ. बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये
کہ 22 اکتوبر کو 14 اگست کو پاکستان بنا, 15 اگست کو ہندوستان بنا, اور 22 اکتوبر 1947 کو پاکستان کی طرف سے قبائلیوں کو داخل کیا گیا کشمیر کے اندر. اور جب قبائلی آزاد کشمیر اور پھر سری نگر تک پہنچے تو مہاراجہ ہری سنگھ نے اس وقت مجبوراً وہ اسٹیل اینڈ اسٹینڈ جو ایگریمنٹس کا اس کو وائلیٹ کیا گیا, اس نے ہندوستان سے مدد طلب کی. اور پھر 27 اکتوبر کو ہندوستان نے مہاراجہ کی درخواست کے اوپر اپنی فوجیں کشمیر کے اندر اتاری اور ہندوستان کا قبضہ ہوا. اس طرح بدقسمتی کے ساتھ ایک کشمیر جو آزاد ریاست تھی وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی. اور اس وقت سے لے کر آج تک ہماری ساری جو اسٹرگل ہے, ہماری جو کوشش ہے وہ یہی ہے, اور ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے کہ 14 اگست 1947 کو جو ریاست جموں کشمیر ایک آزاد ریاست تھی جس کی ہزاروں سال اپنی ایک تاریخ ہے, اس کی اس آزاد حیثیت کو بحال کیا جائے. دونوں ملک جو ہے ہندوستان اور پاکستان اپنی افواج بھی ڈرا کریں اور کشمیریوں کو آزاد رہنے کا اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے. MashaAllah, very good. I'm just gonna, for those listeners that may not be fluent in Urdu, I'm just gonna briefly translate that to English. So, much as Siddiqui has said that after the breakup of the British Raj, Pakistan became independent on 14th of August, India the next day on the 15th of August, and Kashmir on the 22nd of October was divided into 3 pieces. That's Indo-China piece that's under China, near the Ladakh border, and then what we call Maqbuza Kashmir, most of us Indian occupied Kashmir, which we can legally say now. And then what we have is Azad Jammu Kashmir, Gilgit Baltistan. Their movement wants to see the 3 parts united and revert back to full independence pre-1947, and to see that Pakistan and India live together and Kashmir not be a bone of contention, but almost be as a friend, a bridge of friendship is how I would put it. I just want to hear, we should hear a bit more about it from our guests. And Mr. Sanwar, if you could just tell us how you briefly got involved in the movement of Kashmir, why you think it's important to get involved in the movement of Kashmir. فیض صاحب, میں فرسٹ ٹائم جو خصوصاً ویسے تو کشمیر کے حوالے سے بچپن سے ہی لگاؤ تھا, لیکن 1985 میں یو کے سے ریٹرن کے بعد میرے 2 دوست جو تھے وہ آلریڈی جے کے ایس ایل ایف میں تھے, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جے کے ایس ایل ایف کے بارے میں. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا میرا لگاؤ جو ہے وہ جو کشمیر کی آزادی کی طرف مزید بڑھا. اس کے ساتھ ساتھ پھر 90 میں کیونکہ تحریک زوروں پہ تھی, تو وہاں سے مقبوضہ کشمیر سے کچھ ہمارے دوست مجاہد وہ ہمارے علاقے میں آئے, ان کے ساتھ پھر باقاعدہ پارٹی میں 90 میں شامل ہوا, جو ہمارے لوکل جادلہ میں ایک بہت بڑا ہمارے تاریخ کھڑی شریف کی تاریخ کے میں پہلا جلسہ ہوا تھا جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے. تو اس میں پھر انسپائر ہو کے میں نے جے کے ایل ایف جوائن کی, اور سنس وہاں سے لے کے آج تک جے کے ایل ایف کے ساتھ منسلک ہوں. Again, I'm just going to brief it down to English because we have a lot of young people listening to Revive Radio, pleased to say so that, and they may not be fluent in Urdu, so I'm just going to brief it how Mr. Hussain got involved was simply through, you could almost describe it as a people's movement. Everyone wanted to see and make a difference to what essentially their country, and the people of Kashmir are the best stakeholders. And it just went on from there, has he sort of joined, and from what he says, it looks like it was, but you could describe it as a real movement for Kashmir. Mr. Of course, it wouldn't be fair if you didn't hear from a local resident of New Hampshire. Mr. Niaz, Ahmed, if you could see how you got involved and why you did get involved in the issue of Kashmir. پہلے تو کیونکہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ کافی کشمیر کے بارے میں ہمیں بتاتے رہتے تھے اور کافی اویئرنیس دے رہے تھے ہمیں کہ کشمیر کے کیا کیا مسائل ہیں, کیسے کشمیر کو پرابلم ہوئی ہے, کیا کیا مسائل آئے. اس کے بعد پھر اس وجہ سے کیونکہ ہمارے اندر جو اویئرنیس آتی رہی ہے, اس کے بعد ہمیں اس کے ساتھ دیکھا کہ کشمیر کے اندر بہت ساری اسٹرگل ہے, بہت سارے مسائل ہیں اور ان کو ہم نے ہی حل کرنا ہے. تو اس حوالے سے پھر جو کشمیر کے حوالے سے کام کرتے تھے ہم ان کے ساتھ منسلک ہوتے گئے, خاص کر جے کے ایل ایف کے ساتھ پھر ہم منسلک ہوئے, اور اس کے بعد پھر ہم اسی کے اوپر کام کرتے ہیں جتنا ہم کر سکتے تھے.
I'm going to ask another question. I think it's what the listener would be thinking of, and in their mind. Why JKLF though? There was other movements at the time. Why did you specifically choose JKLF, sir? इसमें देखा कि जो जिन्होंने जान दी है अपनी, जो शहीद हुए हैं, वो तकरीबन JKLF के साथी थे, सारे साथी। खासकर अमानुल्लाह साहब ने बहुत एफर्ट किए, उनको जो है देख के मैं बहुत जो है कन्विंस हुआ हूँ। उनकी जो है जिस तरीके से वो काम कर रहे थे कश्मीर के लिए, जिस तरीके से वो एफर्ट कर रहे थे, तो ये चीजें जो है वो कन्विंस कर रही थी। And again, same question to you, Sajid sir. Why JKLF? JKLF मैं ये समझता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर वाहिद जमात है, तंजीम है, जिसने एग्जैक्टली कश्मीरी कौम के सामने अपना एक प्रोग्राम रखा, एक मंशूर दिया और मसला कश्मीर का एक ऐसा हल पेश किया जो बड़े सगीर के अंदर अमन की जमानत भी है, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बगैर किसी उसके एक पुरअमन, पीसफुल और बड़े सगीर के अंदर एक अमानुल्लाह खान साहब ने एक फार्मूला भी पेश किया कि एक ब्रिज का रोल अदा कर सकता है अमन के हवाले से। और मैं ये समझता हूँ, और उस वक्त भी जब मैंने JKLF ज्वाइन किया, आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, JKLF ही वाहिद वो तंजीम है जिसने रियासत जम्मू कश्मीर का एक ऐसा हल पेश किया इसके अलावा और कोई ऑप्शन था नहीं। क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर बुनियादी तौर पर, थोड़ी सी डिटेल में बात 1-2 मिनट आपके लूँगा, यहाँ पे एक बात को समझना बड़ा ज़रूरी है और यहाँ के ऑडियंस को कि जो मसला कश्मीर है ये बुनियादी तौर पर किसी मजहब का मसला नहीं है। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफुल ख्याल और मुख्तलिफ मज़हब के लोग बसते हैं सदियों से, और ये रियासत जो है बुनियादी तौर पर इसकी शनाख्त और पहचान और आइडेंटिटी का मसला है। इस बुनियाद पर JKLF ने एक ऐसा फार्मूला दिया कि एक सेकुलर स्टेट रियासत जम्मू कश्मीर जिसमें तमाम मज़हब के लोग एक अपने मजहब के मुताबिक अपने उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि जो JKLF का फार्मूला है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्योंकि दोनों इस वक्त रियासत के ऊपर काबिज हैं और बगैर कोई अपनी शिकस्त, मतलब क्योंकि अगर आप ये समझेंगे कि अगर हिंदुस्तान के पास कश्मीर जाएगा तो हो कैन पॉसिबल कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर को छोड़ेगा और फिर वहाँ की जो मुसलमान अक्सरियत है वो क्यों हिंदुस्तान को ज्वाइन करेगी। और इसी तरह अगर वहाँ की जो हिंदू आबादी है जम्मू के अंदर, लद्दाख के अंदर बुद्धिस्ट है, वो क्यों पाकिस्तान को चुनेंगे हिंदुस्तान के मुकाबले में। इसलिए कश्मीर की एक अपनी पुरानी तारीख है, उसकी एक अपनी हिस्ट्री है। रियासत जम्मू कश्मीर हमेशा एक, जब भी आज़ाद रहा, खुद मुख्तार रहा, उसने तरक्की की मंजिल तय की। और JKLF के पास जो फार्मूला है मसला कश्मीर के हल का, वही आइडियल फार्मूला है, और दैट इज व्हाई कि मैंने JKLF को ज्वाइन किया। Thank you very much for that answer. And just to sort of recreate what you have said is you joined JKLF because it looked like the movement that was suited. It was a movement that represented people from all ethnicities of Kashmir, and I felt that was important to you. You mentioned about, when you talked about occupied Kashmir, you mentioned both Pakistan and India. But let's be honest, you do have a Azad Kashmir government. How does that work? Sorry? You do have the government of Azad Kashmir, which has its own president, prime minister, national assembly, Supreme Court. So how does that then work? I am sorry to say, मैं आपके इस क्वेश्चन की तरफ क्या बात करूं। बेसिकली आज़ाद कश्मीर जो है बुनियादी तौर पर 4 अक्टूबर 1947 को जब ये गवर्नमेंट बनी तो उस वक्त इस गवर्नमेंट के ज़िम्मे 2 काम थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि यहाँ के लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं आज़ाद कश्मीर के 4000 मुरबा मील के, ये एक इनकलाबी गवर्नमेंट का क़याम अमन में लाया गया था, जिसकी अपनी फौज थी, जिसकी अपनी मास वाई करेंसी को, जिसकी अपनी वजारत दाखिला थी, जिसकी अपनी सारी वजारतें थी। लेकिन बदकिस्मती के साथ आज़ाद कश्मीर जो गवर्नमेंट है वो एक्ट 74 के बाद बिलखसूस और फिर मौदा कराची के बाद अमलन जो है वो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के हम हिस्सा नहीं है। हम जब ये कहते हैं कि हम वफाक, पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद हमारा वफाक नहीं है, वी आर नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये जो रियासत जम्मू कश्मीर है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो 57 है 257 उसके मुताबिक भी आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर जो उसके ज़िम्मे 2 काम थे, लेकिन बदकिस्मती से एक तफैली रियासत बन गई पाकिस्तान की और पाकिस्तान ने हमेशा वहाँ पर अपनी मर्जी के हुक्मरानों को मुसल्लत किया। और आज सूरत हाल यह है कि वो जो 2 मेन जिम्मेदारियाँ थी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के ज़िम्मे, फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों के बुनियादी मसाइल के हल के लिए और सेकेंडली ओवरऑल जो तहरीक आज़ादी का बेस कैंप बनना था, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये रियासत फेल हुई दोनों कामों में। और आज 77 आफ्टर 77 ईयर्स के बाद
सूरत हाल ये है कि अमलन आज़ाद कश्मीर हुकूमत का ना तहरीक आज़ादी से कोई ताल्लुक है और ना ही वो लोगों की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है मुहैया कर सकी। और आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर पिछले 1-1.5-2 साल से एक मूवमेंट है, एक स्ट्रांग मूवमेंट है, पब्लिक राइट्स मूवमेंट्स है, और वो लोगों की जो मायूसियाँ थी, वो जो लोगों की कैफियत थी, उसको कन्वर्ट किया गया है। आज लोगों के अंदर शऊर आया है और आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट जो है अमलन वो मैं ये समझता हूँ कि एक फेल रियासत के तौर पर सामने आई है। थैंक यू। Thank you very much for that. I was so keen to let the guest speak that I didn't actually introduce myself on how I became involved in the movement of Kashmir. To be honest with you, I became more involved accidentally. I was studying and I was sitting down. I can still remember what I was eating, and it was quite good food, a few pieces of chicken, chips, and pizza, as any young people would eat. And it showed Channel 4, and it showed the report on Kashmir. I couldn't really swallow my food. How can I, as a decent human being, sit there and eat this food, live under this roof, when my sisters and brothers cannot know, a mother cannot know whether a daughter might come back from college, her son might come back from college, her husband may be charged with terrorism and not come back and never be seen again. And it's about the fight for natural justice. A fight for natural justice. We would fight for anyone as a decent human being. Therefore, I became involved and started working on Kashmir, and I've worked in the UK across party, really. And then when the war in Iraq happened, I couldn't justify, and I had to support the party that was against the war. And I joined the Liberal Democrats and continue to work with them to this day. And I'm the chair of Liberal Democrat Friends of Kashmir. Mr. Hussain, if I could ask you just to sort of, how defranchised are the people of Kashmir from the government of Azad Kashmir? From Mr. Gues said, it seems the government is defranchised from the people. And what influence are the political parties of Pakistan having in the politics of Azad Kashmir? Obviously, महमूद साहब, ये एक क्या कहते हैं फैमिला है कि आज़ाद कश्मीर में पहले तो कश्मीरी प्रो कश्मीरी किस्म की सारी सियासी पार्टियां हुआ करती थी, तो उसका लोगों का कुछ ये एतमाद था कि वो जिसमें कैच खुर्शीद की पार्टी होगी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी और इन लोगों का हुकूमत बनने के चांसेस थे, तो कश्मीर के लोगों के ये था चांस के कश्मीरी दमसेल्फ गवर्न कर रहे हैं। लेकिन जब से पाकिस्तान की बेस पार्टीज ने जो ना आज़ाद कश्मीर में इंट्रो किया है, तो उससे इसकी आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट की वैल्यू है या लोगों की हैसियत से की वो ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि आज आज़ाद कश्मीर में अगर कोई पीपल्स पार्टी का, नून लीग का या पीटीआई का कोई भी मिनिस्टर या वजीर बनता है, वो विदाउट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और उनके आका के बगैर कुछ कर नहीं सकता। अगर कश्मीर में कोई चीज़ बनानी है या कश्मीरी लोगों को कोई फैसिलिटेट करना है, तो उसके लिए उनको पहले उनसे इजाज़त लेनी होगी, फिर और बहुत सारी रेड टेप है जिनको वो क्रॉस करके कश्मीरी को कुछ फ़ायदा हो सकता है। इसी सूरत में आज कश्मीरी लोग जो हैं वो अवामी तहरीक की तरफ बढ़ रहे हैं। Thank you very much, Mr. Hussain. That was excellent comment and explanation for the question asked. And then, of course, in Azad Kashmir, we got Gilgit Baltistan. So how did that sort of come about, Mr. Niaz Ahmed? We've got Gilgit Baltistan as well. Why? How is that separate from Azad Kashmir government, and how did it become separate? Just a brief note for our listeners that may not know. उनका क्वेश्चन स्विच कर लें। Yeah, I mean, I think Gues, would you want to take that question? जी, थैंक यू सो मच। देखें, यही एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ हमारी तारीख के साथ। बुनियादी तौर पर जब ये डिवीजन हुई तो उस वक्त 1947 में आज़ाद कश्मीर के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, उन्होंने 28 अप्रैल 1949 को एक एग्रीमेंट किया जिसे मादे कराची के नाम से जाना जाता है। उन्होंने वो एग्रीमेंट करके आर्जी तौर पर गिलगित बाल्टिस्तान का कंट्रोल जो है हुकूमत पाकिस्तान के सुपुर्द किया। और ये उसकी वजह यह बताई गई थी कि चूंकि आज़ाद कश्मीर के पास वसाइल नहीं है
اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے درمیان چونکہ بہت زیادہ زمینی فاصلہ ہے اور ہم اس کا کنٹرول سنبھالنے کی پوزیشن نہیں ہے نظامی طور پر. بٹ آج تک اس کے بعد ٹل نو 77 ایئر ہو گئے ہیں. گلگت بلتستان کے اندر سے بھی آوازیں اٹھتی رہی, آزاد کشمیر کے اندر سے بھی اٹھتی رہی, بٹ وہاں پر گلگت بلتستان کو عملاً ریاست جموں کشمیر سے الگ کر دیا گیا. وہاں لوگوں کے بیسک رائٹس کو ختم کیا گیا. آج تک وہاں پر ابھی یہ 2009 سے پہلے وہاں پر کسی قسم کی کوئی فیسلٹیز, بنیادی ضروریات زندگی تک وہاں نہیں تھی, اور وہاں پر پاکستان کے کالے قوانین نافذ تھے لوگوں کے اوپر. لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ ہم کس ملک کے شہری ہیں, ہم کشمیری ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور الٹیمیٹلی وہاں پہ آج ایک موومنٹ شروع ہوئی ہے. میں آج بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے اور ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی انٹرنیشنلی جو رجسٹرڈ ہمارا کیس ہے اس میں گلگت بلتستان 28,000 مربع میل ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آزاد کشمیر گلگت بلتستان کو بائیں ملا کر ایک نمائندہ جمہوری انقلابی حکومت, ایک آئین ساز اسمبلی کا قیام جو ہے وہ ہمارے وجود میں نہیں آتا, تب تک جو ہے مسئلہ کشمیر کے اوپر پیش رفت ممکن نہیں ہے. الٹیمیٹلی پاکستان کی حکومت نے ہمیشہ گلگت بلتستان کو اپنا 5واں صوبہ بنانے کی کوشش کی. اس سے پہلے بھی ایفرٹس کی گئی, اور آج بھی پاکستان کے جو عزائم ہیں وہ یہی ہیں کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنایا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی صورت میں پاسبل نہیں ہے. لیگلی اور انٹرنیشنل جو قوانین ہیں وہ اس کے اوپر کسی بھی صورت پاکستان اس کو کشمیر کا صوبہ نہیں بنا سکتا. Thank you very much for the excellent explanation. So, again, for listeners that may not be fluent in Urdu, basically, in what the government of Pakistan presented the government of Kashmir, which was new at its time, that it wouldn't able to be administered Gilgit Baltistan, which is quite a distance. If you're sort of traveling, I have traveled to the area, and it's a very nice area, and they have a very small airport, which you could describe as a medium-sized car park, really, in the United Kingdom, one-floor car park, really. It's got 2 propeller planes that fly to Islamabad, something resembling something out of a movie of Indiana Jones. Again, if you get any speck of rain or anything like that, the flights are totally stopped. Yes, I agree with Gues that I have visited the area, met the people, lovely people, but there is a lack of so much potential in that area for tourism. Yet there's so much lack of it. You can actually feel and see that for someone like me that's traveled in different areas across the globe in different countries. And yes, that's definitely true. Do you see, Gues, that now, if Gilgit Baltistan was to, the government of Azad Kashmir could effectively administrate it's what it is, its territory. Do you think it's possible for it to do that now? Yes, why not? آج بھی اگر آزاد کشمیر کی گورنمنٹ جو ہے وہ چاہے تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اس کے لیے 2-3 جو ہے وہ ہم نے پلانس ان کے سامنے رکھے ہیں, اور بہت دفعہ ہم نے کوشش کی کہ جائنٹ جی بی اور آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بائیں مل بیٹھنے کا موقع ملے, اور بہت دفعہ ایز جے کے ایل ایف ہم نے اس کے ایفرٹس کی, اور اس کے لیے 3-4 جو تجاویز سامنے آئی. نمبر 1 وہی جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی, اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جس طرح کا آزاد کشمیر کا سیٹ اپ ہے اسی طرح گلگت بلتستان کو ایک الگ سیٹ اپ دیا جا سکتا ہے, جس کا اپنا وزیر اعظم ہو, جس کا اپنا صدر ہو, اور ان دونوں 2 صوبوں کے اوپر مشتمل کشمیر کی ایک حکومت قائم ہو, جس کی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک اپر ہاؤس ہو, اور وہ دونوں خطوں سے لوگوں کو لے کر ایک اپر ہاؤس قائم کیا جائے, اور اس طرح بھی ایک گلگت بلتستان آزاد کشمیر کا ملاپ ممکن ہے. بٹ ایشو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی آئی ایم سوری ٹو سے, یہ الفاظ شاید مناسب نہیں ہے, لیکن پپٹ گورنمنٹ ہے, اور ان کے پاس کسی قسم کے کوئی اختیارات نہیں ہیں. ان کو جو آرڈر اسلام آباد سے ملتا ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں, اینڈ دیٹ از ریزن کہ آج دن تک نہ وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے مسائل حل کر سکے, اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے بہت زیادہ جو جائز شکوے ہیں آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کے ساتھ, وہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ پچھلے 77 سالوں میں آزاد کشمیر کی گورنمنٹ حکمران کہاں تھے, انہوں نے ہمارا خیال کیوں نہیں کیا. بٹ اس کے باوجود آج گلگت بلتستان کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر نوجوان جو ہیں, جو شعوری تبدیلی آئی ہے, ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ وی آر پارٹ آف اسٹیٹ جموں آف کشمیر, کہ ہم ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں یہ اس طرح کے جتنے منصوبے ہیں انشاءاللہ ناکام ہوں گے, اور ریاست جموں کشمیر انشاءاللہ آزاد ہوگی. Well, thank you very much for that. We will shortly be going to break. You have been listening to Revive Radio. My name is Mahmood Faiz, and I'm your host. Don't forget to subscribe, comment, and even watch us on YouTube, Revive FM. Follow us on Facebook and Instagram. If you're on social media, why not share the link with your friends so you're not the only person, and you share with your friends. I'm just going to read out a few more comments that have come in
program. If Kashmir says, welcome, special guest, Sajid Siddiqui Saab. Welcome, Sajid Siddiqui Saab. I think you're getting a bit of a celebrity status here, sir. Welcome, Sajid Siddiqui Saab. Yasser Naveed. How do you think what the Kashmiri diaspora can play a vital role in the unification of Kashmir? Yasser Naveed. And Shahid Iqbal says, Haji Saab, Zindabad. So thank you very much for delivery. As I said, we're going to short break now, and we should return with some of the sort of question that I posed. If you are listening, please do make comments, and we should be able to. I'll try and do my best to answer ask the questions to our guests. Lettings. We manage over 200 properties in and around Northwest London, keeping our landlords and tenants updated with all the latest laws and legislations. Based in Edgware, our experienced specialist negotiators always ensure we maximize the full potential of your property. Call us now on 0208 952 0808 for a free no obligation quotation, or visit our website www.maxwellestates.co.uk for further information. Maxwell Estates, the name you can trust. With UK Export Finance, I'm fulfilling more export orders from around the world. सोशल हाउसिंग में रहते हैं और कोई मसला हो तो शिकायत करने का तरीका जानिए। मरहला 1, अपने लैंडलॉर्ड को बताएं। अगर ये फिर भी हल ना हो, मरहला 2, अपने लैंडलॉर्ड को शिकायत करें। और अगर आप उनके जवाब से खुश ना हो तो मरहला 3, हाउसिंग ओम्बड्समैन को शिकायत भेजें। वो इसकी मुंसिफाना तफ्तीश करेगा। एक महफूज घर का होना सबका हक है। अपने हुकूक जाने, मुलाहजा करें gov.uk/social housing। अस्सलामुअलैकुम। सर्दियों में फ्लू और कोविड-19 ज्यादा आसानी से फैलते हैं और आपको सख्त बीमारी का शिकार बना सकते हैं, मगर फ्लू और कोविड-19 Okay, basically it goes back to, I believe it's 1982, not far from here, this place called East End. Coming out of mosque, I met a gentleman by the name of Raja Farouk, I believe he's passed away, granted Jannah. And he had a copy of a magazine called The Voice of Kashmir. He was asking donation of 10p towards the magazine.
So I took a copy of it, gave him 10 pence, and went home and flicked through the pages and saw the map of Kashmir, the borders of China, Afghanistan, Russia, all that. Although born in Mirpur, Azad Kashmir. So articles written by Mr. Marullah Khan, the late Marullah Khan, so attracted me very dearly. I went through the whole magazine a couple of times. And those days, there was no mobile phones, telephone lines were expensive. So what I did, I actually wrote to Marullah Khan, who was based in Birmingham. Who was the chairman of JKLF at that time? He was the founder and chairman. I wrote to him saying that I came across a copy of Voice of Kashmir, and I found it very, very interesting, and I believe it's something that I would like to be more involved. Having said that, at the same time, in our local community, there was another gentleman, he was a local councillor, Sardar, Mulk Sardar, and a few other people. They met us a few weeks prior, including my cousin Javed Ashisa, who passed away as well a few years ago. And they invited us to a meeting, and they said, we want to set up a Kashmiri group, Sardar Jamhuriya Kashmir. So I mentioned that in my letter. I said, Marullah Khan Sahab, there are some friends here who want to set up a small organization called Sardar Jamhuriya Kashmir. And he wrote back to me after 7 days, obviously the way Mayor used to work at that time. So he said to me, that's very heartening to hear that youngsters are beginning to realize their identity. I said, before you join any party, go through our, send a few extra material, go through this and see what you decide. So he sent me a few other booklets, which I went through, and it all makes sense because the way they presented issue of Kashmir in very straightforward and simple sort of terms. So I said, fine, this is the right party for me. So then obviously I never looked back. Then obviously I started sending donations to Ahmed Sahab at that time because I was earning £20 a week, and I used to pay them £5 subscription, which was a lot of money at that time. And then basically we kept in contact via mail. Then there was a demonstration in Hyde Park. Because I was on my own, then obviously I invited a few other friends to join me, Farooq Saab, and then obviously things took on from there. Well, thank you very much, Mr. Hussain. And we've got on the comments, we've got Mr. Afkar Sharif and Mr. Tamur Zulfikar. They ask, how can the youth members of Kashmir Diaspora hope for the cause of an independent Kashmir? Mr. Sanwar Singh, could you elaborate on that? I mean, if some youth want to get involved in your movement or in the movement for an independent Kashmir, how can they get involved? Yeah, inshallah. And the JKLF in UK well known, and हमारी जो है ना तकरीबन हर सिटी में ब्रांचेस मौजूद हैं. तो ऑलरेडी हमारा फेसबुक और ट्विटर पे अकाउंट्स हैं. यंग जो है ना वहाँ से देख सकते हैं. हमारी वेब पेज भी है, वेबसाइट, और उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं. और मज़ीद इंफॉर्मेशन गेट टुगेदर से भी मिल सकती है. तकरीबन लंदन में, लूटन, स्लाव, बर्मिंघम, लीड्स, मैनचेस्टर, सभी जगहों पे नटिंघम में हमारे यूनिट्स और ब्रांच मौजूद हैं. जो साथी राब्ता करना चाहें वो कर सकते हैं. And coming back to you, Mr. Hussain, what are the social media platforms that the youth can use to get in connect with your movement? Yes, I think that's very, very important that we bring our youth on board, because our youth are our future. And they are obviously yearning to get some sort of a platform where they can play their part. Yes, we, like my colleague said earlier on, we have our website, we have our regular meetings, we have our regular demonstrations. I think that's one step forward if they want to participate.
they can contact us. We're more than happy to accommodate them. We want them to lead this struggle, this peaceful struggle, because youth are obviously are well aware of international issues, especially in UK, and we welcome them wholeheartedly. We want them to come forward, join us, and give us some ideas how we can move forward. So the platform is there for them to come in. All they need to do is just contact us, email us, or meet us personally. We'll be more than happy to accommodate them, to guide them, and be part of the struggle. And we try to promote the issue of Kashmir as much as possible. Students in the universities, colleges, wherever they are. I think this is something that we do encourage all the youngsters to come forward and promote the identity of Kashmir. I think some excellent suggestions there, but I think we live in the United Kingdom. I presume most of it. So, I would say to you, get involved in the United Kingdom, not only with JKLF, but the main political platforms that are available. And I think you could join one of the big political parties. You could join Labour, which has a Friends of Kashmir group. You could join Conservative, which has a sort of in the process of making Friends of Kashmir. But of course, we know that good-looking, intelligent people join the Liberal Democrats and join Liberal Democrat Friends of Kashmir. Far more effective. And I would say this, being part of a political party and voting is 100% more effective than just sitting there doing nothing. Get involved. We live in this country. We vote in this country. We pay our tax in this country. We should have a say on what ethical, moral grounds compass this country travels in. And there's no better moral, ethical compass than providing liberty and democracy to across the globe. And that includes the people of Kashmir. There's a real people's movement taking place in Azad Kashmir at the moment, Mr. Gues. How has that come about? क्वेश्चन मेरे लिए थैंक यू सो मच। इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक मोमेंट है, मैंने पहले भी इसके ऊपर बात की, आपके सामने रखी है कि पिछले 77 सालों में लोगों को जो एहसास महरूमी है, जो लोगों के मसाइल हल नहीं हुए हैं, अल्टीमेटली आज आज़ाद कश्मीर के अंदर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नाम से वहाँ पे एक मूवमेंट बनी है। और कश्मीरियों का एक हमेशा से एक मसला रहा है कि कश्मीरियों के ऊपर एक ताना भी रहा है, और हमने बहुत एफर्ट्स किए इससे पहले कि कश्मीरियों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मुत्तहिद किया जाए। बट मैं ये कहूँगा यहाँ पे कि हमने बहुत एफर्ट्स की एज पार्टी, बट हम इसमें नाकाम रहे। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री 77 ईयर्स आज़ाद कश्मीर में बिलखसूस 5 अगस्त 2019 के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई नीना कबाइल कश्मीर में, तो आज़ाद कश्मीर के लोगों ने और यहाँ के नौजवान ने ये फील किया कि किस तरह हम इकट्ठे होकर टूगेदर होकर इस तारीख को और आज़ाद कश्मीर के अंदर एक राइट मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। उस हवाले से आज़ाद कश्मीर के अंदर पिछले 1.5-2 साल पहले जो लोगों के बुनियादी मसाइल थे, उसके हवाले से वहाँ पे एक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का क़याम जो है हमारे वजूद में आया। और ये मैं यहाँ पे अपनी पूरी कम्युनिटी को, ओवरसीज कश्मीरियों को यकीन दिलाता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त जो है वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है और सारे लोग एक पेज के ऊपर हैं। सारी कश्मीरी कौम को हमने पेज के ऊपर लाया है और हमने 2 बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। ऑल दो ये अभी जस्ट एक इनिशियल स्टेज है, हम बहुत आगे बढ़ना है। अभी हमारे बहुत से आगे टारगेट्स हैं वो हैं इसके अलावा भी। और 24 हमारे मेन जो मुतालबात हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों के बेसिक राइट्स के हवाले से, और फिर अल्टीमेटली जो हम जा रहे हैं बुनियादी तौर पर वो सिर्फ मसला वहाँ आज़ाद कश्मीर के बेसिक राइट्स का नहीं है, बल्कि मसला जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसे तमाम कवानीन, आप कह सकते हैं कि एक्ट 74, मादा कराची, इन सब की मनसूखी और अल्टीमेटली एक आइन साज असम्बली के क़याम का हमारा मुतालबा है। हम उस तरफ जा रहे हैं। हम ये समझते हैं इस सारे सिनेरियो में कि जब तक मुजफ्फराबाद को आज़ादी नहीं मिलेगी, रियासत जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवाना मुश्किल है। अब श्रीनगर की आज़ादी थ्रू मुजफ्फराबाद होगी। जब तक कश्मीरी बाख्तियार नहीं होंगे, जब तक वो दुनिया के सामने अपना मुकदमा खुद नहीं पेश करेंगे, जब तक अपनी बात खुद नहीं रखेंगे, हमें इंटरनेशनली सपोर्ट नहीं मिलेगी कश्मीरी इशू के हवाले से।
یہ دس از ناٹ اے بائی لیٹرل ایشو, یہ قومی آزادی کا مسئلہ ہے اور یہ الٹیمیٹلی کشمیریوں کو اپنی آزادی کی جنگ خود لڑنی ہے. میں ایک مرتبہ پھر یہاں پر اپنے ڈائسپورا کو, کشمیریوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئیں ہم سارے اختلافات کو بلا کر, ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کر بینگ یہ کشمیری ہم متحد ہوں اور ہم دنیا کو پیغام دیں کہ ہم کشمیری ایک غیرت مند, باشعور, زندہ قوم ہیں اور ہم اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے. Thank you very much, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں اضافی طور پر کہ 12 جنوری کو یہاں لیوٹن کے اندر جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی سپورٹ میں یہاں پہ ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے, جس میں بلا تفریق پارٹی نظریہ سارے کشمیریوں سے گزارش ہے کہ وہ 12 تاریخ کے اس ایونٹ میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں. اور ایک اور اضافی بات بھی کرنا چاہوں گا آپ اسی کو ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے کہ 11 فروری 2025 کو مقبول باد شہید کے یوم شہادت کے موقع پر بھی میں یو کے اندر بسنے والے تمام کشمیریوں سے یہ گزارش کروں گا کہ مقبول باد شہید صرف JKLF کے یا کسی آزادی پسند تنظیم کے قائد نہیں تھے, وہ نیشنل ہیرو تھے, وہ پوری کشمیری قوم کے مشترکہ قائد ہیں. اور اس حوالے سے مقبول باد صاحب کی برسی کے موقع پر بھی آپ سارے کشمیری انڈین ہائی کمیشن کے سامنے کشمیر کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں اور وہی پیغام دیں کہ کشمیری وی آر ون, کشمیری ہم ایک ہیں اور ہم اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے. اور ایک اور بات بھی اضافہ کرتا چلوں بات ختم کرتے ہوئے کہ آج اس ریڈیو کی وساطت سے میں بہت سے پاکستانی اینکر پرسن, پاکستانی علماء, بہت سے لوگ ہیں, لمبی ایک فہرست ہے جو ہماری آزادی کو سپورٹ کرتے ہیں, بٹ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو فاؤنڈر ہیں تحریک منہاج القرآن کے, انہوں نے ہمیشہ ہر فورم پر بلکہ اپنی کتابوں کے اندر بھی اور مختلف اپنی تقریبات کے اندر بھی کشمیریوں کے اصل موقف یعنی جو کشمیری چاہتے ہیں, کشمیریوں کے حق آزادی کو نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ ان کی کھل کر سپورٹ کی ہے. میں اس چینل کی وساطت سے ان کا بہت شکر گزار ہوں. MashaAllah, excellent. And of course, this Rod Radio is part of Major Quran, and you've had a good voice on that. I'm just going to read out some of the comments. The Liaquat Lonsa is thanking Revive Radio for raising the issue of Kashmir and putting our voice. He's welcomed you, Sajid Siddiqui Saab, to Great Britain. But he also has a question. What is your view on the recent comment that Zakmi Prime Minister Anwar al-Haq speech on jihad made? میں یہ سمجھتا ہوں جی وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب یہ اسی طرح کی ایک سازش ہے ہماری اس پرامن نان وائلنٹ موومنٹ کو سبوتاژ کرنے کے لیے. وزیر اعظم صاحب کا یہ بیان میں سمجھتا ہوں کہ بہت خطرناک ہے. ایک ایسے وقت میں جب 9/11 کے بعد دنیا کے سارے حالات چینج ہو گئے اور جب کشمیریوں نے ایک پیسفل نان وائلنٹ موومنٹ شروع کر رکھی ہے آزاد کشمیر کے اندر, یہ اس کے خلاف ایک سازش ہے. اگر وزیر اعظم صاحب کو جہاد کا اتنا شوق ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ وہ ریزائن کریں. ان کے جو 53 وہاں پہ MLAs کی ایک فوج اور وزیروں کی فوج ہے اس کو ساتھ رکھ کے وزیر اعظم صاحب جہاد کے لیے اعلان کریں, گن اٹھائیں, آگے بڑھیں. We are with him, no problem. Well, thank you very much. Just to read that in English, what Siddiqui Saab has said that what the Prime Minister said is putting a label on them, which is a dangerous footstep. And JKLF is a peaceful movement. It does not believe in violence, and nor does it encourage violence in any form whatsoever. Mr. Mahmood Saab, 11th of February, we heard Ms. Giza. How can people get involved on the 11th of February, and what has JKLF got planned? Yes, 11th February is a very significant day in Eastern Kashmir. Our great leader, the father of nation, Mahmood Shahid, departed from this world, and I think it's something that we've been honoring this day for ever since he left this world. So every year we hold massive rallies throughout the world. It's well publicized in advance in press and media. So we all know where Indian High Commission is, Aldrich. And so nearest tube station, Holborn. So normally all these demonstrations take around midday. So now it's about a couple of hours. So we encourage apart from Kashmir, any freedom-loving people from throughout the world. We have people coming from various backgrounds,
communities from Sikh communities, we had people from Black Lives Matter, people from various backgrounds. So because it's a peaceful story, it's something that we significant for us. So we want everybody to come in and join us for a peaceful struggle for a nation which has been deprived of basic rights since the last 76 years. So I think it's any person with the iota of conscience should support the rights of people of Kashmir. Coming back to early on your question about our youth in UK, Kashmir, I think they're the one we look forward for them to come and lead us, lead this movement, because they're born here, bred here, they know what the rules are, and we are very privileged and lucky to be in England where we have so many facilities where we can promote and propagate our struggle in ways which we are denied in certain part of world, in Azad Kashmir and in occupied Kashmir. So this goes in our favor, that we hold massive rallies, demonstrations, that the world know. Because normally the concept is people think, even now, even some politicians, they think the Kashmir issue is some sort of territorial dispute between India and Pakistan, which is not the case. So this is the reason we are asking all the youngsters to come in and come forward and join us on the 11th of February in massive sort of numbers. So let the world know that we are not part of India nor Pakistan. We want to be given a choice, a right of self-determination, which is our birthright, to decide our destiny according to wishes and will of people, i.e. whether you want to be part of India, part of Pakistan, or independent Kashmir. Unless until we get that choice, we get that our determination, unfortunately, the region will remain in a deadlock. There will be no peace and prosperity. And, the way things are, like it's said that Kashmir is a border. Well, thank you very much, Mr. Hussain, for your contribution. I'm now going to come back to Mr. Sanwar Hussain. Mr. Hussain, I've been attending these marches as I did in our commission for many years. And one thing I've noticed, and it's almost like a tsunami, in fact, it was almost like instant, like flicking a switch, that when you attended it, you would get the Pakistani flag, you get Tariq Kashmir, you get JKLF flag, you get this flag, that flag. But now there's just one flag, and that's the Azad Kashmir flag. Whether it's JKLF organizing or whether it's anyone else organizing, it's only the government Azad Kashmir official flag that's still. Could you explain to us how that's come about and why people feel it necessary for them to carry that flag? फैज साहब, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. वजह यह है कि आज़ाद कश्मीर का डायस्पोरा जो है वो यहाँ पे डिफरेंट पार्टीज़ की सूरत में मौजूद है. तो उनकी वजह से, क्योंकि हर बंदा, हर पार्टी अपना अपना फ्लैग लाती थी, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं कि फिर वो यूनिटी नहीं होती. इस यूनिटी की वजह से JKLF ने ये किया कि हम अपना फ्लैग नीचे करते हैं, तो हम एक आज़ाद कश्मीर के फ्लैग के नीचे यूनिटी करते हैं और सब उसमें जितने भी थॉट्स रखने वाले कश्मीरी हैं या हमदर्द पाकिस्तानी हैं और दूसरे आज़ादी पसंद लोग हैं, उनको यहाँ जो है ना दावत दी जाती है और इसलिए कश्मीर के फ्लैग को आप किया गया. Well, thank you very much for that answer. And coming back to Mr. Sagisa, how do you see how the people of Azad Kashmir see the future of Azad Kashmir, as in real Azad Kashmir, as in before pre-1947, when it was actually not under the British Raj, but was separate totally? How do you think the people see the Azad Kashmir see their future in that? मैंने पहले भी आपसे ये जिक्र किया, आज फिर भी ये कहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के लोग बुनियादी तौर पर इससे पहले 77 ईयर्स में जितने भी वहाँ पे मसाइल थे, लोग ये समझते थे कि हम बहुत जल्द जो है रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो आज़ाद होगी और हम दोबारा यूनाइट होंगे. बट जो इस वक्त की सिनेरियो है, जो सूरत हाल है, उसके बाद लोगों ने इसको फील किया और आज आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बड़ी तब्दीली है.
लोग ये समझते हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग अपना जो फ्यूचर है वो ये समझते हैं कि हमें पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी मदद आपके तहत हमें अपनी इस जंग को खुद लड़ना है, हमें अपने क़ुव्वत बाज़ू पे इस तहरीक आज़ादी को आगे बढ़ाना है, और वो उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकती जब तक आज़ाद कश्मीर को आज़ाद ना करवाया जाए। सॉरी टू से, ये आज़ाद कश्मीर जो है ये दुनिया की शायद वाइड स्टेट है जिसके साथ कश्मीर के साथ लफ्ज़ आज़ाद इस्तेमाल किया गया, हालांकि वो किस हद तक आज़ाद है इसके बारे में अब आज़ाद कश्मीर का हर नौजवान बाखूबी आगाह है। और आज आज़ाद कश्मीर के नौजवान को वो खोखले और बेबुनियाद नरों से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। आज आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मोमेंट है, आज़ाद कश्मीर का हर बच्चा, जवान, बूढ़ा, मर्द, औरत इस बात के ऊपर मुतफिक है और इस बात का पता चल गया है कि हमारी आज़ादी के रास्ते में रुकावट कौन है, हमारे बुनियादी जो हकूक़ हैं उसके रास्ते में रुकावट कौन है। आज कौम जो है एक पेज के ऊपर है, और मैं ये समझता हूँ कि अब हर कश्मीरी, वो जो हमारा एक फार्मूला था, जो हमारा एक नज़रिया था, हमारी सोच थी, आज पूरी कश्मीरी कौम एक पेज के ऊपर है और उनका ये मौक़िफ़ है और ये समझते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है एक आज़ाद, खुद मुख्तार और खुशहाल कश्मीर में ही। I mean, knowing the population of Azad Kashmir and very important issue, let's say tomorrow is totally independent. Pakistan decide to look, we've had enough of spending billions and millions on arms. We've had enough of buying weapons from the West. We've had enough of our generals taking possibly backhanders or politicians. We're going to cut clean. We're going to start new. We're moving at run your own country. Could Azad Kashmir be actually a viable economical country? इस हवाले से बहुत लंबी बात की जा सकती है। आपके पास चूँकि टाइम बहुत मुख्तसर रह गया, मेरे ख्याल में शायद 4-5 मिनट रह गए हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि कायदे तहरीक अमानुल्लाह खान साहब की बहुत सी किताबें मौजूद हैं, हमारे बहुत से और सीनियर राइटर ने इसके ऊपर किताबें लिखी हैं कि आज़ाद कश्मीर के पास इकनॉमिकली ज़िंदा रहने के लिए जो वसाइल हैं। मैं सिर्फ एक बात के ऊपर आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। यूँ तो बेशुमार इसके ऊपर थीसिस लिखे जा चुके हैं, बेशुमार किताबें लिखी जा चुकी हैं। सिर्फ इस वक्त जो वाटर रिसोर्सेज हैं आज़ाद कश्मीर के और जो वहाँ से बिजली, इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा रही है, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा ये कहा, फिर ये कहता हूँ कि इस वक्त 4700 मेगावाट बिजली के प्रोजेक्ट आज़ाद कश्मीर के अंदर स्टिल इस वक्त हैं। 2700 मेगावाट बिजली आज़ाद कश्मीर पैदा कर रहा है। आज़ाद कश्मीर के अंदर टूरिज्म के लिए बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है। सिर्फ पिछले 1 साल में खाली वादी नीलम हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें मोर देन 5 लाख लोग जो है वो 1 साल में वादी नीलम में खाली टूरिस्ट वहाँ पे गए हैं। बदकिस्मती ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का मौजूद नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी मादनियात, हमारे पहाड़, हमारे जंगलात, फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेज और टूरिज्म, और फिर सबसे बढ़कर जो हमारे पास इकनॉमिकली हमारे जो यहाँ से ओवरसीज जो हमारे बेखसूस बरतानिया के अंदर मोर देन 1 मिलियन लोग तो सिर्फ यहाँ रहते हैं। इसके अलावा यूरोप, मिडल ईस्ट और दुनिया भर में फैले हुए कश्मीरी जो अपना ज़र मुबादला वहाँ पे भेजते हैं कश्मीर के अंदर। सिर्फ अगर हमारा जम्मू कश्मीर बैंक शेड्यूल बैंक बन जाए तो मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर जो है ये सोने की चिड़िया बन सकती है और बहुत मुख्तसर टाइम के अंदर सिर्फ टूरिज्म को, सिर्फ वाटर रिसोर्सेज को, मादनियात को, फॉरेस्ट को और लास्टली जो है जो रेमिटेंस है, जो बहुत बड़ा हमारा एक एसेट है, उसको अगर हम जम्मू कश्मीर बैंक को शेड्यूल बैंक बनवाने में कामयाब होते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो जिस मुल्क में आप रहते हैं, यूरोप और बहुत छोटे छोटे जो मुल्क मैंने यूरोप के देखे हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा हम आगे जा सकते हैं और आज़ाद कश्मीर एक तरक्की याफ्ता मुल्क में शामिल हो सकते हैं। Thank you very much for that. There's a next question from Iftikhar Sharif. Why haven't we been able to get the United Nations to enforce the United Nations resolution to hold a plebiscite in Kashmir? What can we do to get this enforced? I'm actually going to take the question myself because I've worked in politics a long time, and it's I'll tell you what. First of all, crying baby gets fed first. And I tell you this, partly the Kashmiri people's fault. They call themselves Pakistanis when they go to speak, without thinking the serious consequence. Now, there's nothing wrong with being calling a Pakistanis, but when you go to see an MP or anyone, and you walk away, talk to them about, and you walk out that door, I can tell you, the first thing that comes to his mind is, well, yeah, but how many Kashmiris do I have? What difference will it make? I don't want to upset the Pakistanis. I don't want to upset the Indians. So
it's very important that we recognize ourselves as the stakeholders. Then the second comes is, and again, I'm going to be a little biased here because I'm in politics, is we don't get involved enough in politics. If you're a member of a party, you can then mold that party's policy to speak on not only Kashmir, but many other issues on human rights. And for all I care, obviously, I want you to join the Liberal Democrat because I'm the stakeholder in that. But join any party, join BNP, join RICA, but at least you've joined something, you've made a contribution. And I think the way forward is to join a political party, join a process, put pressure on your party. But if you want to do it without joining a party, there's always local elections, national elections, London elections. Every one of those canvass knocks on your door. Ask them. Said this the only thing, and be blunt. That's what I love. Be blunt. Ask them this. I am Kashmiri. I want to know what your party has done and what it's going to do. Now, you may think that's not going to make a difference, but it will. Because what each of those canvassers goes back to the election campaign, and they put that forward to the campaign team. And suddenly the campaign team goes, hold on a moment. That's an issue we should be looking at. Mr. Sanwar Hussain, if you want to add anything to that? Oh, just I have a rumor in social media. साजिद साहब से के सवाल करता हूँ कि पाकिस्तान के इदारों की तरफ से ये खबर आ रही है कि वो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन डिसफंक्शन करके वहाँ पे पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जाना चाहता, तो इसका क्या मुज़रात होंगे आज़ाद कश्मीर की सियासत पे? जी बहुत शुक्रिया सनवर साहब। ये उसी तरह की कोशिश हैं जिस तरह इससे पहले बहुत दफ़ा आज़ाद कश्मीर के स्टेटस को चेंज करने के लिए, डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये आप समझें कि एक टेस्ट केस होता है, उसको चेक किया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले की तरह ये साजिश नाकाम होगी। ये बिल्कुल उसी तरह आज़ाद कश्मीर के स्टेटस को ख़त्म करने की साजिश है, और अगर इस तरह का कोई अमल किया गया तो इसके खिलाफ आज़ाद कश्मीर के अवाम दोबारा सड़कों पर होंगे, और किसी भी सूरत में ऐसे किसी अमल की हमायत नहीं करेंगे जो ऐसे जम्मू कश्मीर की तकसीम की तरफ जाता हो। Well, thank you very much for those comments. And again, coming back to you, Mr. Sandy, if you want to sort of add anything to that? मैं एज ए लंदन ब्रांच और लंदन के अपने हीरोज का नाम लेना जरूरी समझता हूँ यहाँ पे, खुसूसन जफर शरीफ का, जिन्होंने यहाँ पे बहुत अनथक मेहनत की, और जावेद रशीद साहब का, जो हमारे दोस्त इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा JKLF के लिए और आम कश्मीर के लिए और कश्मीरी कम्युनिटी के लिए बिलखुसूस बहुत काम किया। हम उनके जो है ना रिमेम्बरेंस में उनको ग्रेट सलूट पेश करते हैं। Well, thank you very much for listening to our radio, and I'll be signing on. My name was Mahmood Faiz.